Very good afternoon once again, dear students. This is class of Dheeraj sir from Vatsalabai Banmadi School of Scholar Armory, and we are studying mathematics of standard 6. And our today's topic is properties of subtraction. And we have already studied two properties of subtraction. One is the closure property, in which closure property says that the result of for example, the closure property in addition says that the result of addition of whole number is whole number. Okay, but subtraction में वैसे नहीं है. Subtraction में conditional result आता है. If we are going to subtract smaller number from bigger one, okay, मैं big में से small minus कर रहा हूँ, so then the result will be whole number. Okay, this is whole number, 2 is the whole number, but I am going to subtract bigger number from smaller one, so result will not be whole number. Okay, so ये conditional है subtraction में. उसके बाद हमने देखा था which property, commutative property addition में क्या कहती है, if we change the order of the addition, the result will be same. जैसे 4 plus 6 है, so equals to 10. 6 plus 4 है, equals to 10. But it is not applicable in subtraction. अगर आप 6 minus 4 करते हो, then result will be 2. But 4 minus 6 का result minus 2 आता है, 2 नहीं आता है, negative 2 आता है. So commutative property is not applicable in subtraction. Now it is time to understand about associative property. Associative property, it means if you are grouping the numbers, then result will be same in addition. But this thing is not applicable. This property is not applicable in subtraction. Associative property does not hold for subtraction of the whole numbers. It means it is not applicable in subtraction. जैसे कि मैंने एक एग्जांपल आपको दिया है 8 minus 3 minus 2, इसका हमने 8 minus 3 का एक ग्रुप बनाया है. सेम प्रॉब्लम 8 minus 3 minus 2 का, यहाँ पे 3 minus 2 का मैंने ग्रुप बनाया है. So in bracket 8 minus 3 bracket complete minus 2, ब्रैकेट पहले सॉल्व करो. 8 minus 3 equals to 5, then minus 2. So 5 minus 2 अल्टीमेट रिजल्ट आता है 3. यहाँ पे 8 minus in bracket 3 minus 2 bracket complete 3 minus 2 solve first. 3 minus 2 result will be 1. Then 8 minus 1 as it is, 8 minus 1 equals to 7. So both the results are different. So we cannot so therefore we can say in bracket 8 minus 3 bracket complete minus 2 does not equal to 8 minus in bracket 3 minus 2. So this is not applicable in subtraction. Associative property is not applicable. Result will not be same. Result same नहीं आता है. So that is why does not equal to का साइन हमने दिया हुआ है. So associative property समझ में आ गया. Then property of zero is applicable in subtraction. क्योंकि आप किसी भी नंबर में से 0 माइनस करिए, the result will be number itself. Addition की तरह 5 plus 0 करिए, the result will be 5. ओके, तो ये प्रॉपर्टी सबट्रैक्शन में एप्लीकेबल है. इफ 0 is subtracted from whole number, then the result is the number itself. 5 minus 0 equals to 5, 28 minus 0 equals to 28. तो ठीक है. So associative property and associative property is not applicable. Property of 0 applicable. Commutative property is not applicable. ठीक है. And closure property applicable, but it is conditional. ठीक है. आपको क्लोजर प्रॉपर्टी देखने के लिए बड़े नंबर में से छोटे नंबर माइनस करना पड़ेगा, या सेम नंबर में से सेम नंबर माइनस करना पड़ेगा, देन यू विल गेट द होल नंबर. बट आप बड़े छोटे नंबर में से बड़े नंबर माइनस करने जाओगे, देन यू विल नॉट गेट द होल नंबर. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड properties of subtraction and you will utilize this knowledge to solve the exercise. And I am giving you the homework, and that is exercise 2, sorry,
exercise, wait, yes, exercise 2c, exercise 2c will be your homework, exercise 2c. Okay, thank you very much for enjoying this class. I think we left for one topic. क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में नहीं आएगा तो ओके, आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो दैट रिलेटेड प्रॉपर्टी, ठीक है? तो आप ये समझ लीजिए और बुक पे लिख भी लीजिए। थैंक यू।